I hate him. She is very talkative. She is very very talkative. She can speak anytime, anywhere, to anyone, anything. Gives those. And the best thing about him is उसको एक बार बोलो ना, ऐसे उसको कोई बात नहीं रहती, कुछ वो याद नहीं रखता है, वो झूठ बोलने में एक्सपर्ट है, वो हर चीज़ भूल जाता है. लेकिन अगर मैं इसको एक बार बोल दूँ कि I need this, तो he brings it. I told him once that I love this Kanjivaram sari, वो चेन्नई ना, he bought that also. And then I was like totally मैं impress हो गई थी उस टाइम जब उसने मुझे से साड़ी दिया. like यार इसको याद है ये बात. The first thing like उस टाइम वो इतना बड़ा गधा है, मैंने उसको बोला एक जगह मैंने उसको बताई थी मेट्रो करके, and he went कोई और ही मेट्रो में. And she is such an idiot. Metro in Bombay, you ask anyone, metro means the metro cinemas. And what metro she was talking about was metro shoes. And he was like, I'll come by 7, sorry. And he came by 8:30. 1.5 hours I was just roaming कोलाबा की causeway में. And I told him तू किधर है? मैं मेट्रो के सामने खड़ा हूँ. मैंने कहा है मुझे नहीं दिख रहा तुम्हें मेट्रो. I actually told him, मैंने पूरा उसको description दिया था कि you know मेगडी वाले मेट्रो के उधर आना. And that idiot he went to मेट्रो वाला जो सिनेमा है. Metro, I was roaming around कि where are you? And I called her up कि where are you? I'm at metros. I'm standing at metros. I said even I'm standing at metros, but I cannot see you. So then finally we realized कि okay, this is the wrong metro. And then all the way from that metro I had to go down to Regal. And there the madam was standing. मैं आता हूँ मैंने ठीक है. Then I was standing, मैंने उसको बोला तू रीगल पे मिल. Then he came Regal and उस टाइम पे ना actually कुछ हवा कुछ नहीं चल रही थी. It was all एकदम शांत. Suddenly when he came, he was like, I am in a black t-shirt. मैंने ठीक है. And there was this guy who was roaming in black t-shirt. He was like, बेटे मेरी तो लॉटरी लग गई. और वो सामने से निकल गया. मतलब ये तो है ही नहीं. And then there is this Paresh Dashmana coming ऐसे हाफते पता नहीं काफी टैक्सी पे भाग के आ रहा था. And he's like, Hi, I am Paresh. And suddenly actually यहाँ उस टाइम बहुत हवा चलने लगी. And the big surprise came on my birthday. It was my 25th birthday, and I was telling him he was in Vizag. He was busy with his work. He came on my birthday. He gave me a good surprise with all his friends and all those gifts. No, both of them must have decided something. वो हमेशा दोनों ही decide करते हैं, मुझे खुद ही नहीं पता पड़ता था. शी वो सेंटी मारने लगे थे कि हमारे साथ आखिरी 25th birthday and all. लेकिन आज मुझे ऑफिस जाने में हाफ दे दूँगी. फिर she said नहीं यार ले तो मैंने ठीक है चल ले जो. Then he was standing in Rose, I guess. वो मेरे पीछे खड़ा था. I did not even notice him. मेरी माँ ने मेरे को कॉल करा कि बेटा सरप्राइज मिले. I guess माँ मेरा सजना मिले सजना मिले सजना मिले I always used to tell him I still don't love you and all. But then this guy, he never told that, you know, कि I don't love you. He always used to say I love you, I love you. तो ठीक है, but I still don't love you. And I was like कि ठीक है, she still doesn't love me. What can I do about it? So I kept waiting because I can be patient. That's the best part about me. So I kept waiting, and for about good 2 months or so, she kept telling the same कि I still don't love you. कि maybe one day it will happen, one day, someday. I said okay. दिन शगना दा चढ़िया आओ सखियों ने मेरा सजना नी मेरा सजना
सजनों दी बैके आना नी मेरा सजना दिन चढ़िया दिन शगना दा चढ़िया आओ सखियों नी मेरा सजना दिन शगना दा चढ़िया आओ सखियों नी मेरा सजना मेरा सजना मिलन बधाया नी सजनों दी दिन शगना दा चढ़िया आओ सखियों नी मेरा सजना दिन शगना दा चढ़िया आओ सखियों नी मेरा सजना I'm very happy now. It's been three days. Huh? Today is what? 30th? 27. 3 days. And I'm feeling very good. See the glow on my face. See this sindoor. No, sorry, sindoor and this Mangalsutra. No, this is the Mangalsutra. Sorry. There's my engagement ring, by the way. Still going. Where's it? See? फट गए बेटे. I told you I'll forget this. मैं नहाया और वहाँ रख दी मैंने और हाउसकीपिंग वाला आया था. It's okay. You did not take it. That is it. See, now also you forgot. Faiz Ishmana, तुम्हें salute है मेरा. I love you a lot. ਓ ਗੋੜੀ ਨਾਲੋਂ ਇਸ਼ਕ ਮਿੱਠਾ ਓ ਗੋੜੀ ਨਾਲੋਂ ਇਸ਼ਕ ਮਿੱਠਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਲੱਗ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਓ ਗੋੜੀ ਨਾਲੋਂ ਇਸ਼ਕ ਮਿੱਠਾ ਓ ਗੋੜੀ ਨਾਲੋਂ ਇਸ਼ਕ ਮਿੱਠਾ ਓ ਗੋੜੀ ਨਾਲੋਂ ਇਸ਼ਕ ਮਿੱਠਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਲੱਗ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਓ ਗੋੜੀ ਨਾਲੋਂ ਇਸ਼ਕ ਮਿੱਠਾ ਓ ਗੋੜੀ ਨਾਲੋਂ ਇਸ਼ਕ ਮਿੱਠਾ ਓ ਗੋੜੀ ਨਾਲੋਂ ਇਸ਼ਕ ਮਿੱਠਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਲੱਗ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਓ ਗੋੜੀ ਨਾਲੋਂ ਇਸ਼ਕ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹਿੱਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਟੁਕ ਟੁਕ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਮੇਕਅਪ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਗਿਟ ਪਿਟ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁਈਨ ਸਾਡੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਤੂੰ ਕੈਂਟੀ ਬਿਗ ਬੈਨ